Hello YouTube, my name is Yuvraj Singh and today we are going to discuss one very important and very interesting subject, that is psychology. So in this video we will understand what psychology means, what is the historical background of psychology, how did this discipline emerge, and why did psychology was considered as a science, and what is the matter of study in psychology. So we will follow a very simple approach. I will provide some notes in the form of PPT. First we will read them out and then I will try to simplify them as much as I can. So let us start. First of all, let us understand what does the psychology word itself mean. So it is made up of two words, psyche and logos. The word psyche means soul or breath. The word logo means knowledge or understanding or study. So these are two Greek words, and by this wording itself, we can understand that psychology is trying to understand the matter of breath or soul or consciousness, and it is to get the knowledge about these. So we will also understand why this term was chosen for psychology. Now let us understand the definitions of psychology. Now the definitions we can categorize into two, the early definitions and the current definition. The early definitions, the very first, psychology was understood as the science of soul. Now, later on, when we will understand the historical development of psychology, we will understand that it was emerged from philosophy and physiology, two disciplines. So, from the part of philosophy, we can understand that the very first thing, obviously, बहुत आसान है कि they will try to understand the soul, because philosophers have a very tinge interest in the understanding of soul. So it was psychology was a part of philosophy earlier, and the ancient philosophers were very interested in studying the concept of soul. Very good, but problem kahan hai? The thing is that soul has a very wide and comprehensive meaning. Later we will understand there are some criterias for a discipline to be a science. साइंस के लिए आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, या सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए. So the problem with soul was that it has a very wide and comprehensive meaning. बहुत ही वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग थी. डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, डिफरेंट फिलोसोफर्स, उनका सोल का जो अंडरस्टैंडिंग था वो डिफरेंट था. This definition raised questions regarding its metaphysical nature, physical existence, weight and volume. People started criticizing it severely as soul is a vague term. एक बहुत ही vague term है, clear definition नहीं है soul की. The definition was not accepted by the later psychologists because there is no convincing proof evidence which is adequate to satisfy the general principles of science. So very well, then this theory was discarded. This definition was not accepted by the psychologist. After soul, the psychology as a science of mind. Psychology was defined as the science of mind by the ancient Greek philosophers. So, okay, there is very interesting thing that I got to know about, that earlier I used to think कि ये जो सारी disciplines है emerge, ये psychology है या जो भी है, why did it emerge in the Europe only? That also has a very basic meaning, and we can understand जब हम historical development पढ़ेंगे, then I will all try to explain it in detail. But the very basic reason for this was at that time Europe mein there was much going on. There was scientific revolution, there was industrial revolution, and Renaissance ke period tha. So many things were happening, literature likhe ja rahe the, and that is why psychology also emerged in Europe. So just wanted to share with you guys. So psychology was a branch of mental philosophy at the time, and mind cannot be measured.
अगेन दैट प्रॉब्लम measurable होना चाहिए, clear definition होना चाहिए, objective होना चाहिए. So mind cannot be measured. So this definition does not include overt behavior of human beings. Another problem. Now what is the overt behavior? So behavior are of two types, overt and covert. Covert behavior means anything which is going within you, internal. For example, you feeling anxiousness या nausea feel हो रहा है, so that is covert behavior. Overt behavior is when you start crying, when you're happy, so you start laughing. That is overt behavior, that can be seen, that is visible. So this definition does not include overt behavior of human beings. This definition was also dropped by the psychologist. Now here we need to have one thing in a mind, that brain and mind, they are two different things, they are two different words with different natures and different meanings. So after the definition of mind, they came to consciousness. So in the history of psychology, the main focus of psychology was the conscious experience. This was written by the Bagga and Singh in 1990. There's a small mistake here. According to this definition, we cannot study psychology objectively because it is more personal and subjective. Now, consciousness ka, it's very good and it's very close to psychology, because when we think about psychology, we definitely think about consciousness. The problem is कि consciousness को measure करना, that is very personal and very subjective. Whatever is going within me, only I can tell that. And if I'm telling that, it's very personal and it's very subjective. Now this thing, and another thing what happened, that fast developing field of psychology on abnormal psychology, in which we study about the unconscious part of the mind, raised a question on this definition. So जब ये definition दी जा रही थी, इसके बाद क्या हुआ कि abnormal psychology as a discipline, as a field, as a subdivision develop हुआ. उससे क्या हुआ, abnormal psychology में we study the unconscious mind, the unconscious part of the mind. So again it's challenging the very definition of psychology, because psychology is considered as the study of consciousness, but unconscious part ko we study in the abnormal psychology. And then this definition was also has a philosophical tinge and was not accepted by the modern scientific minded psychologist. Philosophical tinge matlab basically ke जो कॉन्शियसनेस है, अगेन इट्स वेरी फिलोसफिकल बिकॉज उसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बट मेजरमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जेक्टिवली नहीं किए जा सकते. सो दीज वर द 3 अर्ली डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट साइकोलॉजी एक्चुअली मीन्स. इसका मतलब क्या है वाकई. नाउ द करंट डेफिनेशन. So in the early decades of 20th century, Watson, now we'll know who Watson is, but he's the father of school of behaviorism and defined psychology as the study of behavior. Behaviorism, very interesting term. So for now, let us just know that psychology में schools होते हैं. The first school is structuralism, then functionalism, then behaviorism, then there is associationism, and there is psychoanalysis, and there is humanistic gestalt psychology. So there are different schools. या फिर Viennese schools की बात करें, 3 Viennese schools are there in psychology. So अलग अलग स्कूल होते हैं, अलग अलग स्कूल की अलग अलग डेफिनेशन इज सेम, बट अलग अलग अप्रोचेज होती हैं साइकोलॉजी को डील करने के लिए. Now, the Watson is defining psychology as a study of behavior. So let us understand कि इसको study of behavior क्यों बोला, because throughout the psychology की study जितना भी हम करेंगे, mostly it will remain same. The definition is that psychology is the study of behavior and mental processes. Behavior जरूर आएगा. It's very important and very fundamental to psychology. So according to Morgan et al., 1986, Watson rejected mind as a study of psychology and insisted that psychology be restricted or confined to the study of behavior. Watson ने कहा mind को हम
नहीं कंसिडर कर सकते, बिकॉज अगेन देर आर प्रॉब्लम्स इन दैट. हमें साइकोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए ओनली एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर. According to Watson, there are no essential differences between human and animal behavior, and we can also learn about our own behavior from the study of what animals do. इनका मानना था कि जो एनिमल्स करते हैं वही कुछ हद तक ह्यूमंस भी करते हैं, और हमारा बिहेवियर काफ़ी मोर और लेस सिमिलर होता है with that of behavior of the animals. Watson emphasized that nothing is innate and everything can be learned. Again, this is a very wide and very profound, what we can say, debate in psychology, कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है, जो साइकोलॉजी है, जो बिहेवियर है, वो इनेट है या लर्न है. सो वेटसन का मानना था कि कुछ भी इनेट नहीं है, कुछ भी आप लेके नहीं आते हैं, हर चीज़ आप सीख सकते हैं और बदल सकते हैं. नाउ वर्ड्सवर्थ ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज दिया था that I had to mention here, that he said that he earlier stated that first psychology lost its soul because definition soul वाली rejected हो गई, then its mind, and then it lost its consciousness. It still has its behavior of sort. तो इन्होंने कहा कि पहले साइकोलॉजी की सोल चली गई, देन उसका माइंड चला गया, देन उसकी कॉन्शियसनेस भी चली गई, थोड़ा बहुत बिहेवियर बचा है उसमें. We will understand what is behavior. First of all, what is the nature of behavior, what is the characteristic of behavior. Again, it is very important to understand this part, क्योंकि throughout psychology में हम behavior को ही पढ़ने वाले हैं. So it is a study of behavior. तो behavior होता क्या है, कैसा होता है, उसका nature क्या होता है, और उसके characteristics क्या होते हैं, we will have to understand very carefully. So let us understand. First of all, behavior is a broad term and a complex phenomena. Of course, we know. Behavior includes all actions and responses of an organism that can be measured directly or indirectly. So, any response, for example, simple responses. For example, if there is a wine, तेज हवा चल रही है, so I'll start blinking my eyes. That is also behavior. Two, if I am hurt, if somebody said something and I'm hurt, and internally I'm feeling very sad, that is also behavior. So important mentions here are the word underlined directly and indirectly. Some behaviors which are observable directly. For example, if someone is laughing, we can see he's laughing, so that is a behavior that can be directly observed. कुछ बिहेवियर डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो सकते एंड दे आर मेजर्ड इनडायरेक्टली. अगेन विल गेट टू नो अबाउट इट लेटर. सो behavior do not only mean bodily movements, it also includes mental and cognitive processes such as feelings, attitude, thoughts and all other internal events. Now जब behavior की हमारे common meaning आती है ना माइंड में, we often misunderstand and we often restrict the definition of behavior to the bodily movement. कि behavior मतलब हंसना, रोना, कोई पैर हिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, that is behavior. That is behavior, no doubt, but that is not the behavior. Behavior is more than that. It also includes mental and cognitive processes such as feelings, attitude, thoughts and all other internal events. If you're feeling something, that is also behavior. Your attitude is also behavior. We'll study about attitude. There is a different separate chapter on attitude. Thoughts and all other internal events, perception and everything, sensation, these are all behaviors. So next point is that cognitive processes cannot be observed directly, but they can be measured indirectly through what people say, that is vocal behavior, and how they react to different problems and situations. What is cognitive process? First of all, nothing but a mental process. कुछ भी mental processes हो रही हैं, that is cognitive process. So cognitive process का problem ये है कि वो directly observe नहीं की जा सकती है, as I was mentioning before.
सो डायरेक्टली मेज़र नहीं की डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, सो व्हाट इज़ द ऑप्शन? इनडायरेक्टली मेज़र करना है। कैसे? व्हाट पीपल से, जो वोकल बिहेवियर है, एंड हाउ दे रिएक्ट टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन, कैसे डील कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन से और प्रॉब्लम से। सो नॉर्मल डेली लाइफ में भी वी कैन मेजर इट, बट दैट इज़ नॉट साइंटिफिक, बट टू सम एक्सटेंट दैट इज़ रिलायबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड और समथिंग और द अदर थिंग इज बोदरिंग दिस पर्सन. So now this is our understanding, our perception. Now based on some scientific methods, psychologists, they scientifically measure such behavior, and these are the cognitive processes that they measure. Now we understood the nature of the behavior. We're going to understand the characteristic of behavior. So Parmeshwaran and Veena in 1988 and 2002, they described the 9 characteristics of behavior. So let us understand what are these 9 characteristics. Okay, so let us now understand the all the 9 characteristics of behavior. First, the very first is that behavior is influenced by a number of factors. Behavior is influenced by a number of factors such as biological, cultural, social, environmental, past experiences. So बहुत सारी factors होते हैं जिन पे behavior जिससे influence होता है. For example, कोई किसी certain culture से आ रहा है, कोई किसी environment में पैदा हुआ है, किसका socialization कैसा रहा है, किसके past experiences कैसे रहे हैं. All these things will influence your behavior. Now behavior varies in complexity. Very interesting again. It basically says कि behavior बहुत simple भी हो सकता है. It can be as simple as picking up a pen, or reflexes like sneezing. So जो reflex responses होते हैं वो भी behavior हैं. And behavior includes certain skills which became a habit over a period of time, जैसे कि बाइक राइडिंग हो गई, कार ड्राइविंग हो गई, रिपेयरिंग हो गई, ऑल दिस. और behavior also includes very highly complex activities like rock climbing, flying a fighter plane, or landing on moon. So बहुत सिंपल भी हो सकते हैं behavior, and बहुत complex भी हो सकते हैं. And then factors influencing behaviors are of different kind. So factors अलग अलग हो सकते हैं और factors के kinds अलग अलग हो सकते हैं. जैसे कि biological and social, ये personal factors हो गए, individual factor हो गए. तो biological and physiological, or we can say psychological and physiological. अब इन्वायरमेंट के अलग अलग तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल, सराउंडिंग, फैमिली, फ्रेंड्स, लार्जर सोसाइटी, कल्चर, सोशल बैकग्राउंड, ऑल दीज. तो बहुत डिफरेंट काइंड्स के फैक्टर्स होते हैं जो कि बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस. नाउ दिस मच वी कैन अंडरस्टैंड दैट हर इंसान का, फॉर एग्जांपल, अगर आप दो लोगों को एक सिमिलर सिचुएशन में भी डालोगे ना, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होगा. सो दैट बेसिकली मीन्स दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर बिहेवियर में. एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लेटर ये पूरा एक सब्जेक्ट बन जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. एंड देन इट सेज दैट बिहेवियर ऑल्सो शोज सम सिमिलैरिटीज. तो कुछ बिहेवियर होते हैं, कुछ यूनिवर्सल बिहेवियर होते हैं, जैसे कि for example, the example given in this is that if a dust falls into a person's eye, he or she tries to remove it. अगर for example कुछ आँख में कुछ चला गया, so mostly हम सब we will have a same behavior that we will try to remove it and we will blink our eyes. Now the next one is that behavior is always purposeful and goal directed. So behavior, there are two types of behavior: approach behavior and avoidance behavior. Now approach behavior is कि जिसमें एक पॉजिटिव गोल है और उस गोल को अचीव करने के लिए वी आर बिहेविंग इन अ सर्टेन मैनर. अवॉइडेंस बिहेवियर के एक नेगेटिव गोल है, दैट मीन्स कुछ चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी आर गोइंग टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर.
एग्जाम्पल कैन बी कि फॉर एग्जाम्पल अप्रोच बिहेवियर का एग्जाम्पल हो सकता है कि if I'm studying or if I get thirsty, so I get up and I go and fetch a glass of water now, and I drink the water. So the purpose here is to get up and get a glass of water. That is the goal कि पानी का ग्लास उठाना है. पर्पस क्या है? पर्पस इज सिंपल. पर्पस इज वेरी सिंपल दैट हमें प्यास लगी है एंड वी वांट टू क्वेंच आवर थ्रस्ट. सो हमेशा बिहेवियर का एक पर्पस होगा और उस पर्पस के लिए गोल होगा. एंड नेगेटिव गोल डायरेक्टिव का अवॉइडेंस बिहेवियर का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इफ़ आई एम स्टडिंग और सपोज मुझे ठंड लग रही है, सो आई गेट अप and I switch off the fan. Now, the purpose is to avoid the coldness and the goal is to switch off the fan. The next one is the behavior is changeable to a large extent. ठीक है, this one is very helpful because जब हम काउंसलिंग के बारे में पढ़ते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, so this is going to be very helpful for us. बिकॉज उनका पूरा फोकस होता है कि बिहेवियर चेंज कैसे करें. सो अर्लियर वी स्टडीड कि बिहेवियर बहुत सारे नंबर्स ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है. सो उन नंबर्स ऑफ फैक्टर को चेंज करके हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं. सो बिहेवियर इज चेंजेबल टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट बिहेवियर ऑल्सो शोज सिमिलैरिटी एंड स्टेबिलिटी टू बी मेंशन्ड है. Stability. Behavior does not change with every change in environment. All forms of behavior do not change. Two things are there कि हर तरीके के environment change से behavior change नहीं होता है और हर तरीके का behavior change नहीं होता है. कुछ behavior है वो change होंगे, कुछ behavior है वो change नहीं होंगे. कुछ environmental factors ऐसे होंगे जो behavior change कर सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो behavior change नहीं कर सकते. बिहेवियर इज इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड का बेसिकली मीन्स ये है कि जो बिहेवियर है, जो पर्सन का बिहेवियर है, अ पर्सन इज ऑलवेज एक्टिंग एज अ होल. एक कोई भी इंडिविजुअल होगा, उसकी लर्निंग प्रोसेसेस होंगी, कुछ उसकी थॉट प्रोसेसेस होंगी, कुछ उसके मैनी डिफरेंट थिंग्स विल बी देयर. अलग अलग चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक पर्सनैलिटी बनती है. साइकोलॉजिस्ट जिस टर्म को पर्सनैलिटी बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियर होता है. और हमेशा कोई भी इंसान है उसका एक बिहेवियर इंटीग्रेटेड होगा, हर चीज़ इन्वॉल्व होगी, एंड दैट वी कॉल एज अ पर्सनैलिटी. द ग्रेटर द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इन द पर्सन बिहेवियर, द मोर इफेक्टिव हिज और हर पर्सनैलिटी likely to be. जितना ज़्यादा बिहेवियर की डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन होगा, मतलब जितना ज़्यादा उसमें बिहेवियर होगा, इफ़ ही इज़ एबल टू stay happy, if he is able to cry also, if he is able to think also, if he is able to perceive also, मतलब जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन होगा उतनी ज़्यादा ही इफेक्टिव उसकी पर्सनैलिटी होगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी. एक पूरी बुक होगी इस पे 106, but still let us now talk in brief कि psychology emerge कैसे हुई. So the origin of psychology goes back to 1870s. 1870s, that means late 19th century. It happened. The word psychology was not in common use before 19th century. 19th century से पहले psychology एक बहुत ही common word नहीं था. Now 1970s में ऐसा क्या हुआ या लेट 19th century में क्या हुआ? Until the middle of the 19th century, psychology did not become an independent science. Middle of the 19th century में psychology is becoming an independent science. 1879, this is now a very remarkable year for psychology as a unique field. क्यों remarkable है? We'll see. So the German professor Wilhelm Wundt established the first psychology laboratory at the University of Leipzig in Germany. So now 1879 में what happens कि जो प्रोफेसर विल्हेल्म वुंड थे, he is a physiologist, so उन्होंने साइकोलॉजी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में, जर्मनी में. नाउ यहाँ से चीज़ें चेंज हो जाती हैं साइकोलॉजी के लिए.
Wilhelm Wundt was a medical doctor by training. He was a medical doctor, as I said, physiologist थे. He was fortunate to work with some of the great physiologists of 19th century. Wundt is recognized as the father of modern psychology. Now, this is debatable, but mostly ज़्यादातर लोग मानते हैं कि Wilhelm Wundt ही is the father of modern psychology. The intellectual root of psychology lies in the union of philosophy and physiology. As I said before कि physiology और philosophy से ही psychology as a discipline emerge हुआ. Prior to Wundt, there was no official psychologist or psychological department. That is why it was not possible to major in psychology. साइकोलॉजी का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे ऑफिशियल, तो साइकोलॉजी में मेजर करना पॉसिबल नहीं था उससे पहले. So Wundt started studying the structure of mind, which referred the immediate conscious experience, the content and the process of subjective experience, such as sensation, thought, feelings and emotions. So now Wundt का एक बहुत specific approach है जो हम बाद में पढ़ेंगे, that is known as structuralism. That was the very first school of psychology. तो इसमें इनका बेसिकली मानना था कि हम कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को जो इमीडिएट, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसमें क्या स्टडी करेंगे, मेरी सेंसेशन, थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशन. सो दे विल आस्क मी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट में व्हाट आर यू फीलिंग, सेंसेशन क्या है, थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है. दे विल आस्क मी एंड आई विल टेल देम, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट, ऑन बेसिस ऑफ इमीडिएट कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, get the content in the process. So that was it. That was the first school of psychology, that is structuralism, जो कि Wilhelm Wundt ने establish किया था, and he is known as the father of modern psychology. Now we often say कि psychology is a science of this, psychology is a science of soul, then consciousness, then mind, and then eventually behavior. So what do we understand as a science? क्यों साइकोलॉजी को साइंस कहा गया? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि साइंस क्या होता है. द डेफिनेशन ऑफ साइंस: द साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज gathered through carefully observing and measuring events. The sole aim of science is to classify, understand and unify the object and phenomena of a material world. So now science is a systematized body. Systematized body is basically means every word has a specific meaning here. Systematized body means कि एक सिस्टम होगा साइंस का, बहुत ही रैंडम वेग नहीं होगी, ऑफ नॉलेज का, गैदर्ड थ्रू केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग इवेंट्स. ऑब्जर्वेशंस होती हैं एंड मेजरिंग होती है इवेंट्स का, दैट इज केयरफुली, और उससे जो नॉलेज मिलती है उसकी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है. The sole aim of science is to classify, understand and unify the object and phenomena of material world. First of all classify करेंगे, then उसको समझेंगे and उसको unify करेंगे, एक separate चीज़, एक separate theory बनाएंगे उसके related of object and phenomena of material world. Now we'll understand कि साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. जैसे हमने बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, और साइकोलॉजी को क्यों साइंस बोला, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, क्यों साइकोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने से हमने उसको साइंस बोला. So the very first is the empirical observation. Like other disciplines, psychology also rests on the experiment and observation rather than an argument, belief or opinion. So हमने पहले देखा था कि क्यों साइकोलॉजी को सोल, कॉन्शियसनेस, माइंड, इन सब की साइंस मानने से मना कर दिया. दी बेसिक रीज़न फॉर दैट वाज कि जो साइकोलॉजी है उसको साइंस तभी मान सकते हैं जब वो किसी आर्ग्यूमेंट पे, ओपिनियन पे या बिलीफ पे रिले नहीं करे, एक केयरफुल एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे रिले करे. तो इसीलिए द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ psychology as a science is empirical observation. Careful experiments होंगे और observations होंगी, उसी के बेस पे
हम कोई भी थ्योरी बनाएंगे और कोई भी एक्सपेरिमेंट को रिलायबल करेंगे. सेकेंड वन इज सिस्टमेटिक अप्रोच एंड थ्योरी. नाउ हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे रिले कर रही है. नाउ साइकोलॉजी ऑल्सो लाइक अदर साइंसेस फॉलो सिस्टमेटिक प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. नाउ पहले हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और ऑब्जर्वेशंस हो रही थी. नाउ उसका भी एक सिस्टम होता है. देयर इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर दैट इज फॉलोड एंड दैट प्रोसीजर इज फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसीजर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्वेशन होती है और ऑब्जर्वेशन का भी एक प्रोसीजर होता है. देन ऑब्जर्वेशन के बाद डाटा कलेक्शन होता है और उसका भी एक प्रोसीजर होता है सिस्टमेटिक. देन हम एनालिसिस करते हैं and then interpretation करते हैं. And all these things are very systematic. They follow a very systematic procedure. The next one is measurement. Measurement is again very important. It is defined as, so measurement is defined as the assessment of numbers to object or events according to certain rules. For example is given that physics has highest number of objects that are measured scientifically according to certain rules, and so it is considered as most scientific. Now बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल फिजिक्स की हम बात करेंगे तो एवरीथिंग इज़ वेरी scientific and everything is relayed on certain rules. कोई भी चीज़ आप उठा के देख लो फिजिक्स में, that will be relayed on certain rules or theory. जहाँ उसके अलावा अगर हम लाइफ साइंसेस की बात करें, बायोलॉजी की, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं which are not that measurable, not they don't follow a certain rules, there are exceptions and all. साइकोलॉजी की भी बात करें, so there is a continuum of मेजरमेंट कि कितनी चीज़ें आप उसमें मेज़र कर सकते हैं, क्या मेज़र कर सकते हैं. तो उसके बेस पे साइकोलॉजी ऑल्सो रिलेज ऑन दैट, उसमें भी मेजरमेंट्स होते हैं. But here it is said कि physics ranks the highest, and that means it's most scientific, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रूल्स के बेसिस पे ही ऑब्जेक्ट को मेज़र किया जा सकता है. सो दैट इज़ अबाउट द मेजरमेंट. द लास्ट वन इज़ डेफिनेशन ऑफ अ टर्म. सो किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहली चीज़ उसकी क्लियर डेफिनेशन होती है. आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ हाइपोथेसिस बिल्डिंग. हाइपोथेसिस में सबसे पहले हम डेफिनेशन बनाते हैं प्रॉब्लम की या सब्जेक्ट की. वो इसीलिए ज़रूरी होता है बिकॉज अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉलो नहीं करेंगे तो एरर्स के चांसेस बहुत होते हैं. सो किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, साइंटिफिक अप्रूव करने के लिए साइंटिफिकली एक प्रॉपर डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड हियर कि इट इज़ वेरी एसेंशियल टू क्लियर थिंकिंग इन साइंस. बहुत ज़रूरी होता है कि आप पर्टिकुलर डेफिनेशन लो. फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोसीजर इन साइकोलॉजी इज़ टू डिफाइन कॉन्सेप्ट्स बाय रिलेटिंग देम टू ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऑपरेशनल डेफिनेशन. साइकोलॉजी में कैसा प्रोसीजर फॉलो होता है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगी, ना उसको रिलेट करेगी कॉन्सेप्ट्स पे, और उससे डिफ़ाइन करेगी कि किसी भी चीज़ की डेफिनेशन क्या हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एंजाइटी की बात करें तो पहले एंजाइटी का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाएगा, देन उसको कॉन्सेप्ट से रिलेट किया जाएगा और उसके बाद डेफिनेशन बनेगी कि एंजाइटी एक्चुअली होती क्या है. ना नॉर्मल टर्म में हम कुछ भी बोल सकते हैं, एंजाइटी इज दिस एंड दैट, बट साइकोलॉजिकली अगर हमें बोलना है तो वी विल हैव टू डिफाइन इट in a very scientific manner. However, definition to some concepts is not possible, like bravery, love, beauty. तो साइकोलॉजी में प्रॉब्लम इज दैट, नॉट एक्चुअली अ प्रॉब्लम, बट द थिंग इज दैट हर चीज़ को आप डिफाइन नहीं कर सकते. जैसे ब्रेवरी है तो कैसे डिफाइन करोगे, एक साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं होगी उसकी, राइट. ब्यूटी है या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी एक क्लियर डेफिनेशन नहीं होगी. सो देर आर सम डेफिनेशंस विच डू नॉट हैव अ, देर आर सम कॉन्सेप्ट्स विच डू नॉट हैव अ क्लियर डेफिनेशन. Psychology is a different type of science. Now,
जैसे हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या लाइफ साइंसेस की बात करते हैं, बायोलॉजी या बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी एंड ऑल, या सोशल साइंसेस की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी इज़ अ बिहेवियरल साइंस। साइकोलॉजी एक अलग टाइप का साइंस है, इसीलिए सम ऑफ द थिंग्स विल बी वेरी स्पेसिफिक टू साइकोलॉजी। कुछ सेलेंट फीचर्स होंगे साइकोलॉजी के। And last point, which is again very important, and that is that whereas the other sciences investigate things around man, psychology studies man itself. जहाँ बाकी साइंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल साइंस में हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, कुछ भी सब्जेक्ट को ले लो, इकोनॉमिक्स की बात करें, सो दे स्टडी एवरीथिंग एनीथिंग अराउंड ह्यूमन। जो भी हमारे अराउंड है वो उसको पढ़ते हैं। The thing with psychology is that psychology खुद man को पढ़ता है, and that is the most critical, complicated, and the most convoluted task that is to be followed. So, and that is all for today, and I will just mention the references for this PPT. I used the course book BPCC 101 and Cicely. Cicely is not actually a book. Book is psychology, and the author name is Cicely. So I just followed two books here, and so this completes our understanding the introduction to psychology, what is psychology, and historical background of psychology, and why psychology is considered as a science.